Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. Now, in today's session, we are going to start with our next module, our next important module, that is control flow. Okay. Now, if these control flow instructions are not available, if they are not available in the language, then your program will be strictly in sequential manner. Getting? Everything will go in which manner? Sequential, one after another. First statement, next, going on. Everything from first till last. There will be no change in the flow of execution. Getting? Which we did it in the last session. Like in last session, we wrote some program. We accepted input, getting cylinder radius, then cylinder height, then we did calculation, then we displayed the result. The flow was strictly in which manner? Sequential manner. But there are lot of programming problems which cannot be solved only in sequential manner. It is never possible. Lot of programming problems will be there in the whole course, and all those problems, it is not possible to solve in which manner? In a sequential manner. Therefore, at that time, we will need control flow. So you can say control flow instructions alter the flow of execution. Alter meaning change. Okay, so they are altering flow of execution. Means they decide in which order the instructions are going to get executed. Correct? So sometimes like you have to take the decision and based on that the flow will be changed. Like you are going to check the condition, and if the condition is true, some other flow is there. If it is false, some another flow is there. So here it is not strictly in sequential. It is decided based on the condition. Or sometimes some code is there which is getting executed repeatedly. So the code is executed and then the flow is again bought at the beginning. Getting? You bring it again back at the beginning and again the code is executed. Getting? So here how the flow is, it is running some block and the flow is brought again in the beginning. Again it will run the same thing. Okay. So such things are called as loops or sometimes they are called as conditional statement. All we will be learning one by one. But what I wanted to say is clear that when control flow instructions are not there, your program will run strictly in sequential manner, one after another. Getting? But there are so many programming problems which cannot be solved only in which manner? Sequential manner. Getting? So abundant of programming problems will come now in your whole course. Till the end of the course, you'll be solving so many programming problems. But it is not possible to solve each and every problem only in which manner? Sequential manner. Many times you have to take the decision, and based on the decision, you have to take the action. If that is true, you have to take some action. If it is false, some another action. Sometimes you are supposed to perform the same thing again and again as well. Get it? So that time we need to go for control flow. So control flow instructions are instructions which alter the flow of execution or which decides the sequence in which the instructions will be executed. Okay, so they decide the order of execution of the statement at runtime. Now, who all come under this category? Okay, so there are three types of control flow instruction. First is selection statement. Okay, we call it as selection statement or conditional statement. Now, in this case, what is done? Okay, conditional statement or selection statement. In this, many code blocks are there, but all code blocks you don't want to run. Okay?
There is one code block which is doing something, second code block, it is doing something, third code block. But you don't want to run all the code block. You want to run any one from the multiple code block selectively. And the selection is done on the basis of condition. Understanding? You have different code blocks. You have multiple code block. Every code block is doing something, but you don't want to run each and every code block. You want to run only one code block from the multiple code block. But that code block from the multiple code block is getting selected. Okay. And the selection is done on the basis of condition. So you're applying some condition. If the condition is true, the first code block will get selected, that will run. But if it is false, then you'll check some another condition. If that is true, then second block will get selected. No, then finally the third block, like that. So here what I want to say is clear. Selection statement or conditional statement, multiple code blocks are there. And from that code block, any one code block will get executed selectively based on condition. Okay. Then second comes iterative instruction, or in very simple term, you can call loops. Okay? You can call them as loops, or very simple word is loop, or you can call them as iterative instructions or repetitive instructions. Here what it is doing, it is performing the same code block repeatedly for some number of times, okay, for some number of times, or till some condition doesn't become false. You have set a condition. Till the condition is true, keep repeating. Till the condition is true, keep repeating. The moment condition become false, stop. Get it? And third we have that is transfer instruction. Okay, transfer instructions. Now, transfer instructions are for uh, moving the flow of control from one point of code to some another point, or transferring the flow of control from some point to some another point. Like you are within the loop is going on. Okay? The loop is going on. Maybe the loop is infinite, or it is not yet completed. The condition is not yet become false. But before that only you want to jump out of the loop. Getting? So you want to transfer the control from within the loop outside the loop. That time you'll need transfer instruction. Or you're performing the loop and at some point you realize you don't want to execute the remaining code. You directly want to come to the beginning. That time also what will be needed? Transfer instruction. Getting? So all these three things one by one we are going to learn. And all the three things are happening in the real life. In our day-to-day life, all the three things happen. And from that only it is being inspired and they have put it into the programming thing. Isn't it? In real life also, so many things happens conditionally. Does everything happen pre-decided? Is human life everything pre-decided? When the human is born, at that time only someone comes and hand over a book to your parents and everything is written in that. And as per that only your whole life is going on. Your first day till you are dying. Nothing happens. So many things are happening on ifs and else. Yes or no? So many things. Every day, like in the morning, if you get up and if it is raining, so maybe you'll decide not to go to college or not to go to office. I'll do today work from home. If it is not raining, then I'll go offline. So many ifs and else you do it na, in real life. In real life, you do so many things repeated also, like attending this session from 4 to 5. You're attending every day 4 to 5. Now, this activity repeatedly you're going to do till some number of lectures. If I have announced that the course will get over in 40, so 40 times you're going to repeat. Or till the condition is syllabus doesn't get over. So you're going to repeat that attending session every day, attending session. This is repeated how many times? Till some condition doesn't become false. So as I said, the same thing happens in our day to day.
life. Getting? Like you have decided if it is weekend. So weekend you have decided we will do something on weekend. But again, क्या करेंगे weekend पे? वो पॉकेट मनी पे डिसाइड होता है, राइट और नो? तो पॉकेट मनी में अगर पॉकेट मनी 1000 से ज्यादा है तो यू विल डिसाइड चलो मल्टीप्लेक्स जाते हैं मूवी वॉच करते हैं. बट नो, आई डोंट हैव मोर देन 1000. तो एटलीस्ट 500 है कि नहीं? अगर 500 रहेगा तो चलो रेस्टोरेंट कैफे में जाते हैं. नो तो चुपचाप घर पे बैठो. तो इसमें भी देखो एक्टिविटी क्या है, वॉचिंग मूवी और गोइंग टू अ कैफे और सिटिंग एट होम. बट ये सब नहीं करना है, इसमें से कोई तो एक करना है कंडीशनली. किसके बेसिस पे? हाउ मच पॉकेट मनी यू हैव. करेक्ट? ऐसे कितने सारे कंडीशंस आते हैं जो काम आपको कंडीशनली करना है. करेक्ट? तो प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो नॉट एक्सक्यूज. ठीक है? तो इस कंट्रोल फ्लो में तीन कैटेगरीज आते हैं. दैट इज वन इज कंडीशनल. In Python, we have only if else, and if elif else. All three syntaxes we'll learn. We'll write exercises based on it. Then comes iterative, or you can call it as loop or repetitive. In that only we have two. Python ने बहुत simple रखा है. No complicated, no unnecessarily too many instructions. कुछ languages में होता है like if you go to JavaScript, उनके पास कितने सारे type के loops है. कंडीशनल में भी कितने दिए. यह क्वाइट सिंपल दे हैव केप्ट. फॉर एंड व्हाइल एंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होता है. ट्रांसफर में दो ही है, एक ब्रेक एंड कंटिन्यू और एक होता है पास. एंड देयर आर मेनी अदर लाइक रिटर्न होता है बट वो फंक्शंस में पढ़ना है. गेटिंग? रेज होता है वो ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ना है. यहाँ शुरुआत में ये दो सफिशिएंट है, दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू. And one more, that is pass. What is the purpose of pass and all? I'll tell you, don't worry. Okay? But main, these two are there. That is break and continue. So now what we have to do is we have to learn all these syntaxes one by one and then write some exercises based on them. And few exercises I'll give you, which you have to solve whenever you get time. I didn't share the exercise of first module that I'll do it today. Don't worry. पहले मॉड्यूल की भी एक्सरसाइज में दे देता हूँ. ठीक है? So we will move to the first thing. Okay, can you give me quick confirmation? The basic idea you got about control flow, like if control flow is not there, how the execution will be strictly in serial manner from first till last. There will be no change in the flow of execution. Flow of execution कुछ भी alter नहीं होगा पहले स्टेटमेंट से लास्ट स्टेटमेंट. बट मैंने कहा कि रियल लाइफ इतने सारे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आएंगे. Getting? They'll say solve the quadratic equation or find out GCD of two numbers, find factorial, so many things. कितने सारे problems solve करने, summation of a series find करने के लिए कहा है. So in solving all these problems, sequential execution won't be sufficient. You have to go for control flow. तो control flow क्या करता है? They alter the flow of execution. They modify the flow of execution. They decide in which order the execution will go on. तीन clear है, conditional clear है, multiple blocks from which any one block will be selected based on the condition. Iterative, the same block is executed for some number of time. And if you want to transfer the flow from one point to some another point in the code, then we use transfer statement. ठीक है? तो can you give me quick confirmation so that we can dive into this first category, फिर सबके syntaxes, फिर ये category, and फिर सिर्फ syntaxes नहीं पढ़ना है. We have to learn some programs also. We have to solve some program based on all the things. ठीक है? तो चलो quick confirmation. I'm waiting for the confirmation. Clear, sir. Sure, others also. बाकी भी Yes, sir. confirmation देते रहो. ठीक है, चलो फर्स्ट कैटेगरी में जाते हैं, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट. Here already I told you, you have different code blocks, and from that, multiple code blocks are there, but you don't want to run all the code block. You want to run any one code block from multiple code block selectively.
but the selection is done on the basis of condition. And I hope you know it. Condition means an expression whose outcome is true or false. Getting? कंडीशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसका आउटकम ट्रू या फॉल्स होता है. लाइक ऐसे लिखा है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18. This is one condition. Sometimes you have multiple conditions and you want to join them. So sometimes सब join like age greater than 18 and मैंने check करना है कि city equal to पुणे है कि नहीं. Getting? Okay, तो कंडीशन ऐसा है कि ये दोनों ट्रू चाहिए. उसका एज 18 से ज्यादा चाहिए, सिटी भी पुणे चाहिए. तो यू विल राइट एंड. दोनों में से कोई एक चला तो और लिखोगे. तो ये बेसिक कंसेप्ट हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा था. वी हैव स्टडीड कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स. प्लीज भूलो मत. जैसे जैसे आगे के मॉड्यूल में जाएंगे तो प्रीवियस मॉड्यूल्स भूलना नहीं है, वो सब कैरी फॉरवर्ड करना है. ठीक है. So conditional statement, you know, in that the first one we are going to learn, that is if statement. Okay. So what this if statement does? So if statement checks the condition. I told you condition means any expression whose outcome is true or false. But अगर Python में ऐसा कुछ expression लिखा जिसका outcome true false नहीं है, तो वो convert कर देगा. अगर यहां मैंने लिखा है if double quote ram, कोई प्रॉब्लम नहीं. डबल कोट राम इज ट्रीटेड एज ट्रू. अगर वो बुलियन नहीं है तो इंटरनली वो बुलियन में कास्ट कर देगा. तो डोंट फॉरगेट द प्रीवियस सेशंस. सो इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट. Now that statements can be one statement or more than one. Now those who have little bit knowledge of Java or C, they use brackets to make blocks. Blocks अगर बना, block means group of many statement, many simple statement. बहुत सारे सिंपल स्टेटमेंट का ग्रुप करना है तो हम उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं. तो इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट कॉल्ड एज ब्लॉक. हियर ब्लॉक is not created by bracket. In Python, block is by indentation. जितने भी स्टेटमेंट सेम कॉलम में लिखे हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. Those statement which come under same column, जब तक आप सेम कॉलम में लिख रहे हो, दे ऑल आर इन वन ब्लॉक. जैसे कॉलम चेंज हो गया, यू आर गोइंग वन कॉलम अहेड और बैक, दैट स्टेटमेंट इज नो मोर अ पार्ट ऑफ दैट ब्लॉक. गेटिंग? तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू नो दैट ऑल दीज आर इन वन ब्लॉक, ट्राई टू कीप सेम इंडेंटेशन. इंडेंटेशन में समझा ना, टैब्स यूज करो या स्पेसेस. गुड प्रैक्टिस है टैब ही यूज करने का. टैब की होता है ना, वो फिक्स इंटरवल से जंप होता है. Getting? So as many statements which are coming in the same column are treated in one block. Here there is no concept of brackets, sir, remember. Okay? And how this will work? It will check the condition. If the condition is true, it will perform the statement and continue with the remaining code. And if it is false, it will directly continue with the remaining code. Getting? And if you're performing only one statement, you can write on the same line as well. If condition colon and यही statement लिख सकते हो. अगर एक ही statement है तो एक रहेगा और नेक्स्ट लाइन में लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. बट एक रहेगा और एक ही लाइन पे लिखा चलेगा. बट मल्टीपल स्टेटमेंट है तो नेक्स्ट लाइन पे ही इंडेंटेशन देकर ही लिखना पड़ेगा. Understanding? ठीक है? And how it will work? It will test the condition. If the condition is true, it will test the condition. If the condition is true, it will perform this block. Getting guys? अगर condition true है तो ये block perform होगा. Condition false है, it will continue with the remaining code. Quickly, I'll show you flowchart. Flowchart means it's a pictorial representation of how your code is going to work or how it is going to run. It is just a documentation tool. Getting? एक just एक documenting tool है. तो डायमंड ये कंडीशन के लिए होता है हमेशा.
तो डायमंड में हम क्या लिखेंगे? कंडीशन। एंड आपको पता है कंडीशन के दो ही आउटकम हो सकता है, वन इज ट्रू एंड अनदर इज फॉल्स, नथिंग एल्स। करेक्ट? सो इफ इट इज ट्रू, it will perform the statements, whatever the statements are. Okay. And after performing statement, it will continue with the remaining code. And if it is false, it will directly continue with the remaining code. Condition अगर false है तो direct remaining code. And true रहेगा तो statement perform करके फिर remaining code. Understanding, guys? I hope the flow chart is clear to you. Syntax देखो. If condition कोलन लिखना है, यहाँ इधर सिंटैक्स कोलन होता है। जो सी या जावा से आते हैं उनको राउंड ब्रैकेट लिखने की आदत होती है, यहाँ नहीं। इफ कंडीशन लिखना है कोलन एंड फिर स्टेटमेंट। कितने भी लिखो बट वो इंडेंटेड होने चाहिए। जब तक वो सेम कॉलम में है, दे ऑल आर इन वन ब्लॉक। एंड if it is going to perform only one statement, there is no need to do indentation. You can write that statement on the same line as well. Okay, इधर just flow chart दिखा है. It will test the condition. If the condition is true, it will perform these statements. It will enter, check the condition. Condition का दो ही आउटकम है, एक ट्रू या एक तो फॉल्स। तो ट्रू रहेगा तो ये ब्लॉक परफॉर्म करेगा, getting execute if statement and continue with the remaining code. And false है तो direct remaining code. I hope you got it. Getting right or no? So real life में example like you stay in a very big bungalow and besides your bungalow there are so many plants, and mom has given one work to you, everyday morning work. रोज का सुबह का एक काम दिया है, that every day whenever you get up you have to water the plants, सारे झाड़ों को पानी डालना है, and then you have to go to bath. क्लियर? मैं खुद का शावर कब लेना है? You have to water the plants and then go to take the bath. Correct? But now you are smart because you are doing Python from me. Okay, तो आप लोग रोज मॉर्निंग उठते ही पहले कंडीशन क्या लगाओगे? इफ नॉट रेनिंग। यस नो? वो बेवकूफी रहेगा ना जो बाहर इतना बारिश आ रहा है एंड फिर भी झाड़ों को पानी डाल रहा है। गेटिंग? दैट पर्सन विल बी अ डम पर्सन ओनली who is watering the plants and rain is pouring. Rain is pouring में समझा ना, ऊपर से इतना बारिश आ रहा है, ऑलरेडी बारिश झाड़ों को पानी डाल रहा है, तो वाई वी शुड गो? तो आप लोग कंडीशन क्या लगाओगे? बताओ। नॉट रेनिंग। ठीक है? तो अगर नॉट रेन ट्रू आया तो काम क्या करोगे? इधर क्या काम रहेगा? वाटर प्लांट, राइट? एंड देन ये काम क्या रहेगा? टेक शॉवर। बट मुझे बताओ, नॉट रेन फॉल्स है, मीनिंग रेनिंग है। नॉट रेन अगर फॉल्स है, मीनिंग रेनिंग, डायरेक्टली गो एंड टेक द शॉवर। व्हाई टू वेस्ट टाइम इन वाटरिंग द प्लांट? गेटिंग? तो आई होप यू गॉट इट। कंसेप्ट, ऐसे कंसेप्ट Sir, बहुत I सारे। had one doubt. हाँ, During when we write the statements while performing the if condition, do we have to write the statements in a single line, like एक के नीचे एक लिखना होता है, right? वो? if there are multiple statements, then one below another with a indentation. Okay. And if it is going to perform only one statement, then if you write on the next line, then also okay, or on the same line if you write, then also okay. Okay. Same line when single statement. But if it is going to perform multiple statement, then you have to write on the next line with the same indentation. Correct? I'm coming to the example, don't worry. It will be more clear to you once I take an example. Okay? Now, today I'll show it in idle, but then later we will install VS Code also. So I hope this is available only. In the initial first or second lecture only we have done this installation. So Python already we have. Along with that, if you install VS Code, it will be more better to write lengthy codes.
when you have proper lengthy algorithms implemented. So VS Code is more better. Okay. See, I'll come to if new, file, new file, new file, like normal notepad sort of thing is opened. We will save it. Okay. So we will save in our folder only, which we have created in the past, Python July 2026. In that, I'll just save it as if demo. If demo, I'm giving file name as if demo. It is automatically saved as .py file. Okay. Now what I'm doing is I'm accepting one input from the user, like enter a number. That's all. Okay. Now this input will show you this prompt, enter a number, cursor will be blinking. You will enter something, whatever you enter. That is returned as a string converted to integer, and then you get it in n. Now what I'm checking is if n less than 10, colon. So condition is n less than 10. True, then whatever you want you can display. But suppose if you want to do two work, दो काम करना है, ठीक है, तो आपको टैब देके लिखना है. ये एडिटर इतना स्मार्ट है कि टैब नहीं, एंटर की करोगे तो व्हेन यू जस्ट प्रेस एंटर इट विल ऑटोमेटिकली कम इंडेंटेड. वो इधर जाएगा नहीं, वो इंडेंटेशन रखेगा. तो आई एम गोइंग टू मेक प्रिंट लाइक दैट, n is single digit. ओके. एंड सपोज मैं और एक स्टेटमेंट डाल देता हूं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड. ठीक है. एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू प्रिंट ऑल डन. ठीक है. यू कैन चेक. So we will be inputting a number. If that number is less than 10, suppose I have entered 7. Is 7 less than 10? Yes. It will come inside. First, it will print 7 is single digit. Hello world. These are the two statements within that if, because they are at the same column. And after that, all done. All done is outside. But suppose if you have given a number which is not less than 10, like you have given 10 only, 10 is not less than 10, or you have given 15, 15 is not less than 10. So directly it will come down and print all done. Getting, guys? As you go on writing more and more exercises, you get used to. Don't worry. It is not that complicated. Getting? Now, if you want to run it, go on run module. Already I have told you every Python file is called as a module. Okay? So run module. See here. Is it waiting for you to enter something? Like I'm entering 8. Okay, that 8 is first returned by input as string 8. That string 8 is converted to integer 8. Then you're checking whether 8 is less than 10. Yes, 8 is less than 10. It will print 8 is single digit, hello world, and then all done. You can check. 8 is single digit, hello world, all done. But suppose, again I'm running, and now I'm giving some other input like 12. Is 12 less than 10? Is 12 less than 10? No. Will it come directly all done? Yes. Okay. So I hope you got it. Yes, guys. Others also, Yes. Nishant and Sohail and all others, those who have joined. Okay. Moving to next thing. I've done recording start here. Okay. Coming to next, that is if else. Now, in this case, if the condition is true, you want to perform something, and false, some other thing. Mean two path you want. True, one code, false, another code. So if condition, I want to perform one part. Now S1 what I've written, not necessarily it is a single statement. It can be more than one. So if it is more than one, try to keep it. Try नहीं, you have to. Try भी नहीं, English भी बहुत important है. So you have to keep it in the same column.
If they are in the same column, it is in one block. Else, okay, again colon and the second part. That is the else part. And after that, any common code is there. जो भी common code है. Here also, if the condition is true, you just want to perform one statement. Else one, you can write on the same line as well. यहाँ एक ही line पे लिख सकते हो. ठीक है? If I try to show the flow chart for this, इसका अगर मैंने flow chart दिखाया, ओके? तो ये आपका कंडीशन है. ये कंडीशन का मैंने कहा दो ही आउटकम है, ट्रू or false. Always conditions are always going to give you only Boolean outcome, true or false. If it is true, then it will perform the if part. Assume करते हैं S1. अगर false है, तो it will perform S2 part. But after doing S1 or S2, it will continue with the remaining code. जो भी आपका remaining code है. Getting? तो S1 हो गया तो भी रिमेनिंग कोड को आएगा, S2 हो गया तो भी रिमेनिंग कोड. तो वट एवर इज द रिमेनिंग कोड, इट विल कंटिन्यू विद दैट. गेटिंग गाइस? ऐसा कितने बार होता है रियल लाइफ में? आप लोग कितनी बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि ट्रू रहेगा तो ये करूंगा, नहीं तो ये करूंगा. गेटिंग? जैसे मॉम एवरी डे प्रिपेयर्स टिफिन फॉर यू. गेटिंग? बट शी हैज डिसाइडेड कि थर्सडे रहेगा तो ही स्नैक्स आइटम, नो तो एवरीडे ट्रेडिशनल रोटी एंड सब्जी. तो मॉम हैज ऑल्सो डन पाइथन. देयरफॉर मॉम उठते ही पहले कंडीशन चेक करती है कि आज का डे क्या है. डे इक्वल टू थर्सडे. अगर डे इक्वल टू थर्सडे ट्रू, she'll prepare snacks item. Getting? Sandwiches and burger and whatever. And false, she'll prepare the traditional roti and sabji and continue with the remaining. ये हो या ये हो, वो टिफिन लेके कॉलेज जाना ही है या ऑफिस जाना ही है. गेटिंग? तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट बताएं हाउ इट इज रिलेटेड इन एवरीडे वर्क. सो इफ कंडीशन इज ट्रू, परफॉर्म स्टेटमेंट 1, एल्स परफॉर्म स्टेटमेंट 2. As I told, if the statement is a single statement, you can write on the same line as well. देखो ऐसे. हाँ, बट अगर ब्लॉक है, मल्टीपल स्टेटमेंट है, तो फिर नेक्स्ट लाइन पे ही लिखना पड़ेगा. बट कोशिश नहीं, यू हैव टू, अगेन आई टोल्ड, कोशिश नहीं, यू हैव टू राइट इट इन द सेम लाइन, सेम कॉलम. लाइन नहीं, सेम कॉलम. एज मेनी स्टेटमेंट्स आर इन द सेम कॉलम, दे आर इन वन ब्लॉक. यहां ब्लॉक का कंसेप्ट किस पे तय होता है, क्लियर है कि नहीं? इंडेंटेशन पे, ब्रैकेट्स पे नहीं होता है. इंडेंटेशन. Getting? So all those which are typed on the same column, they are in one block. Flow chart देखो. First condition tested. If true, perform the if block. False, perform the else block. दोनों में से कोई तो एक परफॉर्म होगा. And after that, continue with the remaining code. ठीक है? I'll come to that with an example. इसका भी एक example quickly दिखाता हूं. I'll create a new file. Save that file. I'm saving it as if else demo, suppose. ठीक है? I'm going to accept again here one input, and input is enter a number, any number. Then I'm checking one condition. See, my condition is n mod 2 double equal to 0. Now, what does this condition says? Mod operator, I hope you remember, arithmetic operator mod. Does it give remainder? We have studied this. Arithmetic operator जब पढ़ा, तब हमने mod operator देखा है. It gives you remainder. And when you are dividing it by 2, possible remainder क्या रहेगा? एक तो 0 या एक तो 1. Yes or no, guys? Any number you take, if you are dividing it by 2, you will get either the remainder as 0 or 1. 10 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर 0 to 9 मिलेंगे.
5 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर 0 to 4 मिलेंगे। अंडरस्टैंडिंग और नो? 10 से अगर डिवाइड किया तो अगर आपको वैल्यू 10 से ज्यादा है, वो वापस डिवाइड होने वाला है ना अगेन, तो लास्ट में आपको रिमाइंडर 10 से किया तो 0 to 9, तो 2 से डिवाइड किया तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या रहेगा? एक तो 0 रहेगा या 1 रहेगा, 0 और 1। So if the remainder part is 0, 0 exactly equal to 0, true. Is it right? So suppose I am writing on the same line. Here I am going to print like this. N is E1. ठीक है? Next line, else print N is odd. Do you agree? कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर इवन है, ये बेसिक है। ये 11th 12th में भी था हम लोगों को, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट थोड़ा सा रहता था हम लोगों को, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। बाद में इंजीनियरिंग में तो पूरा पेपर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे, डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड ऑल। लेटर फाइनल ईयर इंजीनियरिंग पूरा होता है तब कैंपस राउंड आता है, तो टेक्निकल राउंड्स, कंपनी के जब टेक्निकल राउंड्स होते हैं उसमें भी ऐसे ही सब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, डिविजिबिलिटी चेक एंड ऑल। So whenever you're dividing any number by 2, and if the number is remainder is 0, it is even. If the remainder is 1, it is odd. इधर common अगर मैंने कुछ लिखा, all done. Getting? And now if we run it, okay, so देखो depending on what input you give. Suppose I'm giving 12. So tell me 12 mod 2. 12 mod 2. Remainder कितना आएगा? 0. 12 2 से divisible है ना guys? Quotient 6 आएगा, remainder 0. So 0 double equal to 0. Yes, it will print 12 is even and all done. ठीक है? But suppose I give input as 15. तो बताओ 15 को अगर 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1, राइट? Yes. 2 sevens are 14, रिमाइंडर 1. तो is 1 equal to 0? इसका रिमाइंडर 1 है. Is 1 equal to 0? No. It will come to else part. 15 is odd, all done. ठीक है? These are all very basics. 15 is odd because you're going to develop many big programs. Okay? एंड तक आपको बहुत कुछ चीजें सीखना है। जब तक आप एनालिटिक्स वगैरह तक पहुंचोगे तब रियलाइज होगा कि अरे अभी तो हम लोग ये सब इतने डिफिकल्ट कंसेप्ट कहाँ शुरू किया था हमने, ऑड इवन चेकिंग के प्रोग्राम से। व्हेन यू गो इन द रेट्रो हम बोलते हैं ना, पीछे जाके जब देखोगे, जब लास्ट पार्ट ऑफ पाइथन पे पहुंचोगे, that time if you just go back and see, then you'll realize we started with very simple programs of odd and even checking, whereas that time you will be doing some analysis of employee data, you'll be doing analysis of students data and all. That time you'll realize ये कितना difficult तक पहुंच गए हम लोग। Getting? So long way to go, but concept मुझे लगता है clear है। Is it right? Yes. ठीक है? तो can you give me quick confirmation? तो यहाँ तक clear. Now Yes. coming to third one, that is if ELF else. Okay, now what this says, if suppose you're testing one condition, some statement, and else another statement, statement 2. If condition is true, 1, else statement 2. But these statements which we have written, statement 2 and statement 1, that statement 2 itself can be a if else. क्योंकि स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो कुछ भी हो सकता है। स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरी इट शुड बी प्रिंट ओनली और ओनली कैलकुलेशंस और ओनली कॉल टू फंक्शन। कैन द स्टेटमेंट बी इटसेल्फ अ इफ एल्स? तो अगर ये स्टेटमेंट टू ही खुद अगेन एक क्या है, इफ एल्स है, तो और एक कंडीशन, ओके, स्टेटमेंट टू एल्स स्टेटमेंट 3। अगेन कैन द सेम थिंग हैपन टू स्टेटमेंट 3? Can this statement 3 itself be a, actually वो statement 2 था, but 2 को हमने ये पूरा if else से रिप्लेस किया। ऐसे ये statement 3 खुद एक क्या हो सकता है?
Statement 3 itself can be what? A if else. So now what Python has done is they have just simplified it. That instead of writing else and then again a new if else, in this else again a new if else, you can join this else and if, else if, and they have joined it and made a shorter word ELF. Getting? Else if joined condition 2. Again, here also else if and going on. So in simple terms, what you can remember that you are attaching one if else to previous else. Getting? एक if else को वापस क्या अटैच कर रहे हो? If else. वो else को वापस एक if else. And this is specially needed when you have to test more than one condition, not only one condition. जैसे कंडीशन 1 टेस्ट किया, ट्रू रहेगा तो एक स्टेटमेंट, बट फॉल्स रहेगा तो मुझे और एक कंडीशन टेस्ट करनी है। वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 2, बट अगर ये फॉल्स है तो अगेन थर्ड कंडीशन, लाइक दैट। मीन्स माई वर्क इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वन कंडीशन ट्रू समथिंग, फॉल्स समथिंग। नो, अभी फॉल्स रहेगा तो अगेन एक नया कंडीशन टेस्ट करना है। आई गेव यू टुडे वन एग्जांपल ना, वीकेंड है एंड फिर सब फ्रेंड्स ने डिसाइड किया वीकेंड विल डू समथिंग, बट अगेन विल डू समथिंग, बट वो किसके ऊपर तय है? पॉकेट मनी कितना है? तो आपने चेक किया, इफ पॉकेट मनी इज मोर देन 1000 वी विल गो टू मल्टीप्लेक्स। नो, तो चेक वेदर इट इज मोर देन 500। यस, देन वी विल गो टू अ कैफे और अ रेस्टोरेंट। एंड नो, तो सिट एट होम। तो वहां मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट होते हैं, राइट? जैसे पॉइंटर कैलकुलेट होता है व्हेन नाउ आपको ग्रेजुएशन वगैरह में हर सेमेस्टर के बाद आपका सीजीपीए कैलकुलेट होता है। तो इन दैट सीजीपीए कैलकुलेशन they calculate that pointer. There are also multiple conditions are there based on which you get it. Employees salaries, there are also different conditions are there. Income tax calculation में भी बहुत सारे conditions है, इसलिए फिर ITR 1 2 3 4 ऐसे चार अलग अलग टाइप के इनकम टैक्स रिटर्न्स होता है। इन दैट ऑल्सो मल्टीपल कंडीशंस आर देयर, देन स्लैब्स आर देयर, जेंडर का चेकिंग है, फिर एज ग्रुप का चेकिंग है, फिर इनकम स्लैब है। तो many conditions, that time you have to go for this, करेक्ट? तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखो इन जनरल मैंने लिखा है, इफ कंडीशन 1 statement 1. Please remember this statement 1 can be many statement. Only see to it they are indented. Indented means एक column में लिखे हैं. But if condition 1 is false, then check 2. If 2 is also false, check 3. This way nth condition. And if n is also false, then this else part, last else. Get it? So in short, tell me if your code is running statement n. Agar code not running means your Python interpreter is running statement n of your code. If the Python interpreter is running statement n of your code, then what does it prove? It proves that condition n has come true and all the past conditions have come false. मुझे क्या कहना है, अगर आपका Python interpreter nth statement रन कर रहा है, इसका प्रूफ क्या है कि कंडीशन n क्या आया है? ट्रू, और पास्ट के सारे कंडीशंस फॉल्स। एंड इफ इट इज रनिंग दिस डिफॉल्ट, दिस प्रूव्स नन ऑफ द कंडीशंस हैव कम ट्रू। ये वाला कोड अगर रन हो रहा है डिफॉल्ट स्टेटमेंट, दिस इंडिकेट्स नन ऑफ द कंडीशंस हैव कम ट्रू। एग्रीड? ठीक है, तो इसका भी फ्लो चार्ट वैसे ही बनेगा कि पहला एक कंडीशन होगा, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन चेकिंग ट्रू, then perform your statement 1, ठीक है? But if it is false, then you have to check another condition, right? Condition 2, अगर ये true है तो statement 2 रन होगा, ठीक है? And false, so you know it, okay?
So this way, if I put dot dot dot, तो फाइनली हम पहुंच गए कौन से वाले कंडीशन पे, कंडीशन एन पे। तो अगर ये कंडीशन एन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एन परफॉर्म होगा, एंड ये भी फॉल्स है तो डायरेक्टली आपका डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट का पार्ट जो है वो, राइट। बट कुछ भी हो, वन परफॉर्म होने के बाद भी या टू होने के बाद या nth होने के बाद इट हैज टू कंटिन्यू विद द रिमेनिंग कोड, इसके बाहर जो भी कोड है। तो आफ्टर परफॉर्मिंग वन इट हैज टू कम टू दैट रिमेनिंग, और टू हुआ तो भी रिमेनिंग, डिफॉल्ट हुआ तो भी रिमेनिंग। So after doing everything, it has to continue with the remaining code. ये remaining code को आना ही पड़ेगा, nth को भी यहाँ आना ही पड़ेगा, getting? And ये भी आना पड़ेगा, ये default। So I hope you are getting it. Sure guys? See, मैंने इधर Yes. pictorially दिखाया है। You are checking condition one, true, statement one, and after that continue with the remaining code. False, go and check the next condition. True, statement 2 continue with the remaining, nth कंडीशन भी अगर फॉल ट्रू है तो एन स्टेटमेंट, नो तो दिस डिफॉल्ट, एंड डिफॉल्ट होने के बाद भी रिमेनिंग कोड। ठीक है, तो इज द फ्लो चार्ट ओके? मैंने ड्रॉ किया है वो अगर याद रहा वैसे ड्रॉ करो, अल्टीमेटली वही है, इट इज सेम, ओनली while drawing I was showing it horizontally, this is vertical। ठीक है, I'll take an example for this, it will be more clear to you guys। I'll create another file। ठीक है, we will save it, we'll give name to it as if elif else demo। Okay, here also suppose I'm accepting one integer as a input, enter a number। Okay guys, first condition I'm checking whether n is less than 10। Okay, I'm going to print n is single digit। ठीक है, elif n less than 100, suppose I'm going to print n is 2 digit। elif n less than 1000, here I'll print is 3 digit, and finally else I'm going to print n is more than 3 digit। ठीक है, and here also common output I'll give all done। Okay, now it depends on what number you give, like suppose you have given 535, input is 535, is 535 less than 10? False. Is 535 less than 100? False. Is 535 less than 1000? True. It will print 535 is 3 digit number। Okay, suppose I'm giving input as 1024, 1024, is 1024 less than 10? False. 1000 Yes. less, 1024 less than 100? False. 1024 less than 1000? False. Directly it will come here and is more than 3 digit. Getting? And all done. So I hope you're understanding how it is working. Right? See, we will execute this module and try to give different inputs like 456. Is it giving 456 is 3 digit? Again you run, give some different input like 12, it will give 2 digit. 12 is 2 digit, all done. Again you run, give some input 1024,
Now 1024 is 4-digit number. So it will give message more than 3 digit, is more than 3 digit. Okay? This way you can test multiple. And again, as inside, if there was only one statement, you could have written this here only, same line. Will do. अंडरस्टैंडिंग ना. अब हर इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो आप वो एक लाइन पे भी लिख सकते थे. ठीक है. So if this part is clear, you can give me confirmation. First we are just going through the syntaxes and फिर exercises solve करेंगे based on these concepts. Now in this next session what we have to discuss is iterative instructions. Okay, so we have completed with conditional statement or selection statement. And I hope you got it. In conditional statement or selection statement, there are multiple code blocks, and from that, any one code block is getting executed selectively based on the condition. Now, here, what is done? We have a code block, and the same code block is getting executed again and again. Don't we do all the same thing in real life also? Real life में भी होता है ना, like some people do fasting. So they have decided I'll do 40-day fasting, 16-day fasting. So they keep counts, no? That one fast done, then 15 more remaining. One more fast, then 14 remaining. So you're doing that activity repeatedly. In some case, you are repeating it for number of time. Some case till the condition doesn't become false. So iterative statement or repetitive statement or loops are performing some code block repeatedly for some number of times, okay, or till some condition doesn't become false. Other way, till the condition is true. Till the condition is true, it will keep repeating. And the moment condition becomes false, it will stop. Okay, so I hope you're understanding. Now in Python, there are only two types of loop. Very simple. They have given one while loop and another is a for loop. We'll learn the syntaxes, how it works, everything we'll learn. So iterative statement cause a statement or a group of statement. It can be one statement or more than one statement to execute multiple times based on some termination condition. Condition bolo, criteria bolo. So till that termination condition is true, it will keep repeating. And the moment that termination condition becomes false, it will stop. Okay? Now in Python, there are only two types of loop. That's why Python is simple, easy to learn. Why it is easy to learn? They have tried to keep all the syntactic concepts limited. Correct? Libraries abundant are there, but the core language features are very limited. Correct? Limited vocabulary, limited grammar. You just have to use that and develop programs. Okay? So only two types of loops are there. One is a for loop and another is a while loop. Okay? One is a for loop and second is a while loop. Okay, guys? Now, how does for loop and while loop work? That I'll tell you. I'll be teaching you about for loop, while loop. Both the syntaxes we'll learn. First is about while loop. How while loop works. That I'll tell you. But before telling you the syntax and all, some little bit terminologies are needed. One thing, whenever you deal with a loop, जब भी loop से deal करते हो, एक concept हमें लगता है, that is counter. Okay, counter. और इसको हम बोलते हैं loop controlling variable. Okay, you either call it as loop controlling variable or counter. जनरली जब भी लूप्स आता है, नॉट ओनली इन पाइथन, कोई भी दूसरे लैंग्वेज में जाओगे
और लूप्स के साथ काम करोगे तो ये काउंटर आएगा ही आएगा. तो what is that counter? So it is a variable which keeps track of number of iterations done till now. Means अब तक कितने iterations हुए हैं उसका काउंट ये मेंटेन करता है. ओके, तो काउंटर is a variable which is keeping track of number of iterations performed till now. Getting? अब तक कितने iterations हुए हैं उसका काउंट ये मेंटेन करता है या याद रखता है. सेम थिंग वी डू ना इन रियल लाइफ ऑल्सो. मेनी टाइम्स आपने देखा होगा मॉम कैलेंडर पे क्रॉस डाल दिए तो वो क्या है, काउंटर्स ही होता है ना. दे आर वन सॉर्ट ऑफ काउंटर. Getting? Many times in our brain only we keep recording that I did this one time. फिर next time करते हो two time. याद रखते हो and then you have to do that work for 15 times. तो 15 times हो गया तो now you'll stop doing that work. Right? कितनी बार करते हो ना, like those people who go to gym and all, तो उनको बोला रहता है कि 15 repetitions करना है, फिर 12, फिर 10. तो मन में काउंटिंग करते हो ना, like 1 2 3 4 15 हो गया तो फिर वो रिपीटेशन रुका देते हो. दोज हु डू योगा एंड ऑल, योगा में भी जो सूर्य नमस्कार है तो उसका वो पूरा 1 to 10 का साइकिल होता है, तो यू काउंट इट. राइट और नो, यू आर डूइंग काउंटिंग. तो मन में आप काउंटिंग रख रहे हो मीन्स क्या, it is a variable which is keeping track of how many iterations are done till now. And what I want to tell you is this counter is usually involved in the condition. वो जो टर्मिनेशन की कंडीशन होती है ना, वो कंडीशन में ये काउंटर हमेशा इन्वॉल्व होता है. एंड जो बॉडी होता है उसमें ये काउंटर अपडेट होते रहता है. अंडरस्टैंडिंग? विद इन द लूप बॉडी दिस काउंटर गेट्स अपडेटेड. कभी कभी वो अपडेशन इंक्रीजिंग है, कभी कभी डिक्रीजिंग भी हो सकता है. लाइक अब हाईएस्ट वैल्यूज से लोएस्ट तक आ रहे हो तो डिक्रीज हो रहा है, लोएस्ट से हाईएस्ट जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है. बट वो काउंटर को लूप बॉडी के अंदर क्या करना रहता है, अपडेट. यू हैव टू अपडेट. इफ यू डोंट अपडेट इट then the condition can never become false and the loop will never stop and it will go into infinite. Understanding? अगर आपने कंडीशन लिखा है I less than 10 and start 1 से किया था, ठीक है, तो हर बार चेक कर रहा है is 1 less than 10, yes, perform the body. बट बॉडी परफॉर्म करके वापस चेकिंग के लिए आएगा तब ये आई 1 step नियर टू 10 जाना चाहिए, 1 step नियर. अंडरस्टैंडिंग? It should go 1 step near to 10. Otherwise, what will happen? This condition will never become false and the loop will go into infinite. तो ये जो लूप बॉडी है उसके अंदर ये आई को क्या करना पड़ेगा, अपडेट. इस तरह से that after every iteration it is moving 1 step near to termination. एक स्टेप टर्मिनेशन के पास जा रहा है. तो 1 है, अगली बार 2 होगा, फिर अगली बार 3 4, तो एक स्टेप पास जा रहा है ना 10 के. बट इफ यू डोंट डू अपडेशन ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगा एंड इट विल स्टक इनटू एन इनफाइनाइट लूप. कह रहे हैं? तो काउंटर्स के बारे में बेसिक याद रखना है. काउंटर इज अ variable which keeps track of number of iterations performed. Getting? And it is involved in the condition and within the body it is updated. And it is updated in such a way that we are moving 1 step near to termination. अंडरस्टैंडिंग ना, क्लियर? वो मूवीज में कैसे बीच पे यहाँ से हीरोइन भागती रहती है और यहाँ से हीरो, तो कैमरा कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो हर स्टेप पे वो एक स्टेप हीरो एक स्टेप आगे गया, हीरोइन एक स्टेप आगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको मिलना है. मिलना ये इनका मेन गोल है. तो एवरी स्टेप क्या हो रहा है, हर बार एक स्टेप आगे जा रहा है ना, एक स्टेप आगे एक स्टेप आगे, अल्टीमेटली दे रीच टू द टर्मिनेशन कंडीशन. ओके, अभी इसका सिंटैक्स समझ लो. हाउ वाइल लूप वर्क्स. वाइल कंडीशन कोलन देना है यहां, वाइल कंडीशन एंड देन द बॉडी.
That statement can be one statement or more than one. कितने भी हो सकता है, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा रहेगा. Please see to it, it is indented. Indented means they all are typed in the same column. Getting? Okay. How it will work? See here. At the beginning only it is going to check the condition. यहाँ condition check करेगा. ठीक है? Now you know condition outcome are two, true and false. So if the condition is true, it will come inside and perform the statements. जो भी statement है. After statements are done, it will come back again and check the condition. Again condition true है, आ जाओ statement perform करो. Again. जब तक true है, statement perform होते रहेगा. And when the condition becomes false, it will continue with the remaining code. Whatever is after the while loop. Getting? While के बाद जो भी code है, वहां control continue होगा. ठीक है? Yes, guys. Is this basic syntax clear to you? Yes. Now, in Yes. this, they have provided one variation. Python नहीं दिया है, इसमें एक. ऐसे बाकियों को नहीं होता है, यहां ही दिया है. ओके, मैं वो लिख देता हूं नीचे. स्लाइड पे ही देख लो. See. To this while, there is one else block also attached. कुछ लोगों को फनी लगेगा. Some people may say, no, कुछ भी गलत बता रहे हैं. Else तो if के साथ ही होता है ना? Those who have learned C और Java या JavaScript, ये बैकग्राउंड से आता है. उनका genre वो है. तो those people may feel something weird. How else is with a while block? In Python, it is legal, guys. You can write a else block with a while also. But what is the speciality of this else block? Normally else block if and else. If के साथ else होता है. But while के साथ भी है. It will run this else block at the last once only when the while loop stops successfully. ये while loop जब stop होता है. And when it will stop successfully when the condition becomes false. जब condition false होता है, तो while loop stop होगा. Stop होगा तो at the end once only it will run else block and then continue with the remaining. So remember, in this case, else block is executed once at the end when the while loop stops successfully, terminates successfully. Getting? अभी successfully while loop कब terminate होगा? जब condition क्या होता है? False होता है. जब condition false होगा, while loop खत्म. Else एक ही बार run होगा and then continue. But if your while loop is terminated prematurely, premature means condition अभी तक false हुआ ही नहीं है. Condition is not false, but forcibly you have jumped out of the loop. Loop के बाहर निकले by using some transfer instruction. है अपने पास transfer instruction break है. So using the transfer instruction, you have terminated the while loop and you have come out. That time it will not run else block. उस समय else block execute नहीं होगा. I'll give you demonstration. Don't worry. ठीक है? So what you'll remember? It will run else block when once at the end when while loop terminates naturally. Naturally means when the condition become false. Natural termination, ये same concept humans को भी applicable है. Humans also die actually in three way. One, natural death means they have lived life. अभी कितना और जिएंगे? बहुत 100, 101 हो गया, century crossed, and then they die means they have naturally die हो गए. They have lived their life and they have died. Second, they kill themselves, and third, someone else kill. कोई और हमें kill. तो इसमें भी होता है, when you do something wrong in your program, your Python virtual machine kills your program. And sometimes the program itself kills. जैसे human life, suicide, someone else kill, natural death. Same, यही तीन वे से human का death होता है.
एग्जैक्ट सेम प्रोग्राम में भी प्रोग्राम का डेथ भी वैसे ही है। गेटिंग? तो इफ योर प्रोग्राम हैज फोर्सिबली टर्मिनेटेड, फोर्सिबली वो लूप के बाहर आया है, देन इट विल नॉट रन एल्स। बट इफ इट हैज कंप्लीटेड नेचुरली, नेचुरली कब? जब कंडीशन फॉल्स, तब ये रन करेगा। ठीक है? तो इज इट क्लियर या स्टिल आपको डाउट है एल्स ब्लॉक कब रन होगा? तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज एटलीस्ट कंफर्मेशन दो। Sir, in if and else block will only be executed when if condition is not true, right? But राइट। in while and else, only if the condition becomes false for the certain period of time, then else block will be also get executed, right? Yes, yes, you're absolutely right. So Okay. when your condition becomes false, your loop has stopped naturally. At Okay. the end, it will run else block once. Okay, that's what. And if else block will not be running if else condition is true, right? Huh, means if it's true, Yep. then it will go in if part, it will not come in else part. All right. Okay. There, if and else means two things. True to go if, no to come to else. But here this else block is when while loop completes, then run else block once. ठीक है? हाँ, All right. but Sir, हाँ, but the concept you have made clear कि कब इस केस में else कब और उस केस में else कब, वो परफेक्ट रखो, कभी भूलो मत। ठीक है? sir, I have one doubt. और सर फॉर लूप में भी इल्स कंडीशन है क्या मीन्स? है, अभी आएगा ना अभी। हाँ। डोंट बी हरी। once while is completed then we'll come to for, फिर for loop में भी बताऊंगा for को भी else होता है। ठीक है? तो we'll come to that, don't worry। ये पार्ट क्लियर है? ये लूप देखो, it will check the condition, if it is true it will perform this code block, again come and check the condition, if true again run the block. This, it will keep running this code block till the condition is true, and the moment condition becomes false it will continue with the remaining code। गेटिंग? जो भी रिमेनिंग कोड है उससे कंटिन्यू करो। ठीक है? दीज आर ऑल images generated through AI. Normally, if you do Google, you'll not get। गेटिंग? ये आपके चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्ट किया है कि प्लीज ड्रॉ एंड गिव मी वन फ्लो चार्ट फॉर पाइथन व्हाइल लूप। ऐसा इंस्ट्रक्ट, फिर इंस्ट्रक्शन भी देना है, प्लीज ड्रॉ एन एलिगेंट इमेज, यूज लाइट कलर्स, साइज सो एंड सो। The moment you give that instruction, it will start generating one image, and ये इतना मस्त beautiful image आपके chat GPT ने generate करके दिया। Getting? Same you can try with Gemini also, but some AI tools don't generate images। हर एक AI tool का उसका उसका application होता है, उनके core purpose होता है। For that only such tools are to be used। ठीक है? I'll give you one example of while first, then we will dive into the for loop। तो पहले हम लोग एक while का एक एग्जाम्पल देखते हैं। I'll create a new file, we'll save it, I'll save it in this folder, I'll give name to it as while demo। Okay, see, I'm creating one variable with value I equal to 1, so this is my counter, I've initialized it to 1। Then I'm writing condition like this, while I less than equal to 5 colon, I'm going to print that I। ठीक है? तो आई अलग अलग वे से प्रिंट कर सकते हो, जस्ट आई लिखना है या आई इक्वल टू एंड देन वैल्यू, एंड देन आई एम इंक्रीमेंटिंग आई बाय 1। कैन आई इंक्रीमेंट आई बाय 1 लाइक दिस? आई प्लस इक्वल टू 1 यस। हो गया। लास्ट सेशन में अरिथमेटिक, कंपाउंड अरिथमेटिक या कंपाउंड असाइनमेंट, आई प्लस इक्वल टू 1 इज सेम एज आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। पाइथन डजंट हैव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स ना, लेकिन कुछ लोगों को आदत रहेगा सी का या सी प्लस प्लस, आई प्लस प्लस लिखना है या प्लस प्लस आई। दिस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पाइथन डजंट हैव। गेटिंग? यहां मैं लिख रहा हूं ऑल डन। ओके, नाउ हाउ दिस विल वर्क? फर्स्ट, will it start with I equal to 1? It will check 1 less than equal to 5. Is 1 less than equal to 5? Yes.
it will print that one. ठीक है, one print कर देगा. And then I plus equal to 1. Now I will become 2 and come again and check the condition. Is 2 less than equal to 5? Yes. Come inside. Print 2. Make it 3. Is 3 less than equal to 5? Yes. Come inside. Print 3. Make it 4. Again, 4 less than equal to 5? Yes. Come inside. Print 4. Make it 5. Is 5 less than equal to 5? Yes. Come inside. Print 5 and make it 6. And the moment I become 6, is 6 less than equal to 5? No. While loop stop and it will come to all done. Agreed? See. Is it printing 1, 2, 3, 4, 5? All done. Now in this only, I'll add one else block so that you'll come to know how it works. Here I'm writing print all is well. So in this case, when your I becomes 6, till then, I was 1, 1 printed, 2 printed, 3 printed, 4 printed, 5 printed. I become 6. Is 6 less than equal to 5, guys? Is 6 less than equal to 5? False, it will print else, means it will come to else. Now, false means your while loop is naturally terminated. I told you, na, relate. Termination naturally, you are forcibly killing yourself. And when you do something wrong, Python virtual machine is killing you. अगर आपके प्रोग्राम में आपने कुछ गलत किया तो पीवीएम ही आपके कोड को टर्मिनेट करता है. कभी कभी तुम लोग खुद को टर्मिनेट करते हो. एंड तीसरा, नेचुरली हो गया, जितना था वो रन कर लिया तो नेचुरली टर्मिनेट हुआ. Exact human. That's what I always tell in my sessions. Like my teacher, I'm talking about 30 years back, now 28, and before that, 32 years, you can say. In 1994, when I took admission in engineering, that time our Dr. Desai, who used to teach us C, he used to always bombard that everything what is seen in the real life is that in the programming. जो भी आप रियल लाइफ में देखते हो उसी से इंस्पायर्ड हुआ है प्रोग्रामिंग. Basically, computer programming is being inspired only on day-to-day activity. Whatever activity we do every day, to automate that, programming is invented, right or no? So now if I run this, it is printing from 1 till 5. 1 से 5 तक print किया. After that, is it printing all is well? And then all done. So how many times it has run this else block? Once only at the end, when while loop completes. Okay? And suppose I'm terminating this loop forcibly by some means. देखो मैं इधर क्या कर रहा हूं, ऐसे if डाल रहा हूं. If I double equal to 3, I'm writing break. Break is a statement which terminates loop. But when it will terminate? When the condition is true. याद रखो ये जो break लिखा है वो if में भले लिखा है, but वो if को break नहीं करने वाला है. It is going to terminate loop only. Loop को ही terminate करेगा. But when to terminate the loop? When the condition is true. तो आपको condition checking करना पड़ेगा ना, इसलिए if लिखा. But please remember, break is not just going to come out of if. It is going to come out of loop. अब ये break अलग से डिस्कस होगा स्लाइड में, डोंट वरी, बट इस प्रोग्राम में जस्ट दिखाना था. तो जस्ट चेक करो, पहली बार आई कितना है? 1. इज इट राइट? आई 1. 1 लेस देन इक्वल टू 5, इट विल प्रिंट 1. ठीक है, चेक. इज इट 3? नो, इट विल मेक इट 2. ये 2 बना देगा, ऊपर आएगा. इज 2 लेस देन इक्वल टू 5? यस, अंदर आएगा 2 प्रिंट. इज 2 इक्वल टू 3? इज 2 इक्वल टू 3? False. नो, तो नीचे आ गया एंड 3 बना देगा. I plus equal to 1, 3. Is 3 less than equal to 5? Yes, अंदर आएगा 3 print. After printing 3, it will check whether I is 3. Is I equal to 3, guys? Is it exactly equal to 3? Yes.
Yes, break. Break means it will directly come out of the loop. ये break directly loop के बाहर आ जाएगा. Getting? And it will come to all done. It will not print all is well. Understanding? All is well. ये नहीं आएगा. Getting? So I hope you got it. देखो. 1, 2, 3 and directly all done. Has it executed all is well? No. क्यों नहीं? क्योंकि आपका while loop naturally terminate हुआ या premature termination हुआ. Premature means is your program only forcibly killing and coming out of the loop? Means तुम्हारा प्रोग्राम ही forcibly loop से बाहर निकल रहा है. Yes or no? When I is free, it is forcibly coming out. That time it will not run else block. Okay? Sir, I had one doubt. Okay. सर जो ब्रेक वाला था तो इट ब्रेक्स द लूप बट जो लूप है वो सिर्फ while में ही चल रहा है तो एल्स क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है वो? नहीं, but this else is not with the if. This else is while वाला if. While का else है ये. बट जो लूप है वो सिर्फ while में ही कंटिन्यू हो रहा है तो एल्स प्रिंट क्यों नहीं हो रहा लेकिन? नहीं, but what I'm saying, ये वाला else जो है ये while वाला else है, ये if का else नहीं है. ओके ओके First of all याद रखना है, ये else जो है, that is with this while else. ये syntax का है. ये जो syntax दिया था हमने, this one. ये else इसके साथ का है. अभी आपको ऐसे लगा कि मैं did you thought like कि ये else ये if के साथ है, ऐसे कुछ लगा? नहीं मुझे वही लग रहा है कि जो ब्रेक हमने उधर एक के सामने फंक्शन दिया है तो अगर सिर्फ लूप अगर सिर्फ while में ही हो रहा है तो एक बार while का लूप ब्रेक हो गया उसके बाद वो else की तरफ शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा वो डायरेक्ट बाहर क्यों आ रहा है? हाँ, तो that's what I'm saying. ये else block तभी रन होता है जब while loop naturally terminate होता है. Naturally कब terminate? When the condition become false. Please remember, while के साथ जो else होता है ना, while के साथ का else, ये सिर्फ कब रन होता है? When your while loop terminates naturally. Naturally meaning when the condition becomes false. right? So whenever condition becomes false, your loop is naturally terminated. That time only it runs else once. But if your loop has forcibly terminated, अभी तक condition true है, but फिर भी उसके पहले ही आप forcibly break कर रहे हैं, that time it doesn't run else. Okay. Getting? देखो अब जब मैंने ये निकाल दिया, ठीक है? तो is your while loop going to terminate naturally? Yes. Why? Because I becomes 6, 1 print किया, 2 print किया, 3, 4, 5, 5 print किया, फिर I 5 plus 1 6, is 6 less than equal to 5? No, false. While loop stop. That time it will run else once. Understanding? Yes, sir. See, all is well, all done. But if your loop is terminating prematurely, yeah, forcibly you are terminating. You're not waiting for the condition to become false. ये कंडीशन फॉल्स होने के पहले ही आप इसमें से जंप कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हो. यू अंडरस्टैंडिंग और नो? Yes, sir. क्लियर? थिंक लाइक दैट स्विमिंग पूल में इधर से उधर तक जाना है तो वो एंड तक पहुंचना ही है किसी भी हालत, बट कुछ लोग यहाँ से ही बाहर निकल जाते हैं, कहते हैं, है ना? मीन्स तब तक उनका स्टेमिना निकल गया रहता है. इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, कभी ऑब्जर्वेशन, यहाँ से यहाँ तक जाना है, बाय एनी मीन्स जाना है उधर तक. So if someone in between only come out, getting? So how here, if you reach here, after reaching here, some gift is kept. So you will get that gift only when you reach here. उसके पहले ही बाहर निकल गए तो ये मिलने वाला नहीं है. Getting? So Okay. think it that way. Okay. You got it, no? Yes. कि यहाँ से वहां तक किसी भी हालत में पहुंचना है तो उसके पहले ही अगर बाहर निकल गए
तो ये नहीं मिलेगा। अज्यूम करो ये गिफ्ट पार्ट एल्स में है, बट वो एल्स तभी रन होगा व्हेन यू रीच टू द डेस्टिनेशन, करेक्ट? जो आपका टारगेट है, गोल है, करेक्ट? ओके, मतलब जब तक वो लूप नेचुरली ब्रेक नहीं होता तब तक वो एल्स दिखा, तब मतलब जब नेचुरली एंड होगा तभी वो एल्स स्टेटमेंट दिखाएगा। एग्जैक्टली, नाउ यू गॉट इट। एंड यस। अब ये दिमाग में रखना है जब तक अच्छा जॉब नहीं मिलता है, ठीक है? तो टिल यस। देन डोंट फॉरगेट दिस कंडीशंस, यू गॉट इट, कि टिल वो नेचुरली कंप्लीट हो गया तो एल्स, बट अगर प्रीमेच्योर ब्रेक होकर बाहर आया, इन बिटवीन ही टर्मिनेट, देन इट विल नॉट रन दिस, करेक्ट? तो गॉट देखो इट। ना, जैसे मैंने ये कंडीशन डाला तो वो प्रीमेच्योर ब्रेक हुआ, तो 1 2 3 डायरेक्ट ब्रेक होकर बाहर आया तो ओनली ऑल डन, इट इज नॉट रनिंग ऑल इज वेल, ठीक है? एंड राइट। दूसरा, ऐसे कुछ लोग गलत अज्यूम करेंगे ये एल्स इफ के साथ जाएगा। नो, इंडेंटेशन ही अलग है। दिस एल्स इज विथ व्हाइल ओनली। ये एल्स इस इफ के साथ कब जाता था? अगर मैंने टाइपिंग ही ऐसे किया रहता था, आई वुड हैव टाइप्ड ओनली दिस वे, इधर टाइपिंग किया रहता था, देन इट विल कंसिडर दिस एल्स विथ इफ, करेक्ट? यहाँ पूरा इंडेंटेशन पे मैटर करता है, कौन से कॉलम पे है, अकॉर्डिंग, ठीक है? चलो, तो आई होप दिस पार्ट while is clear. Then one more loop is there, और एक टाइप का फॉर लूप है, दैट और एक टाइप का लूप है, और एक टाइप का फॉर लूप नहीं, और एक टाइप का लूप है कॉल्ड एज फॉर लूप, राइट? एंड the syntax, when to use this for loop, everything I'll tell you. Generally, for loops are called as enumeration control, and while loops are generally called as logically controlled. Okay, remember in Python, for loop works only for iterable objects. ये रूल है, याद रखना। For loop हमेशा किसके लिए चलता है? Iterable objects. Okay, and what are iterable objects? देखा है हमने पास्ट में, जब मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ा था ना, इन, तभी भी बताया था, अगर याद है तो। हाँ, यू रिमेम्बर? थोड़ा बहुत कुछ याद रहेगा तो, इटरेबल ऑब्जेक्ट, व्हेन वी टुक दैट इन ऑपरेट, हाँ, Object inside other object. हाँ, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट इन विच देयर आर मेनी ऑब्जेक्ट्स, Group of object. हाँ, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, यू कैन कॉल इट एज अ कलेक्शन, कंटेनर, उसको कंटेनर बोलो, कलेक्शन बोलो, Python call it as iterable, sequence bolo. I gave an example also, like your college bag. So, yeah, office bag. So many things are there, na? Inside that, your tab or tab है, या फिर आपका लैपटॉप है, चार्जर है, वाटर बॉटल है, टिफिन है, पेन है, कभी तो नोटबुक रहेगा, ये नहीं, कुछ मैगजीन्स रहेंगे, या कुछ नॉवेल रहेगा। ये सब वियर्ड चीज है, क्योंकि आपकी जनरेशन नॉवेल्स पढ़ते ही नहीं। आई डोंट नो वेदर यू रीड और नो, बट आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन दैट यस, वी ऑल्सो रीड नॉवेल्स। तो अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि ये भी जनरेशन पढ़ती है बुक्स। तो अदरवाइज फिर वो जंतर मंतर पे जाना पड़ता है ना, गेटिंग? तो आई थिंक इट इज क्लियर। ये बैग है, एंड बैग में कितने सारे ऑब्जेक्ट्स है, राइट? बट ये बैग भी खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो इट इज द ऑब्जेक्ट इन विच देर आर मेनी अदर व्हाट ऑब्जेक्ट्स, तो उसको हम इटरेबल, वन बाय वन यू कैन रिमूव फ्रॉम इट, एक एक करके आइटम्स हम क्या कर सकते हैं, रिमूव, इसलिए उसको इटरेट, इटरेट मीन्स वन बाय वन यू कैन विजिट। सो पाइथन का स्पेशलिटी क्या है? दैट फॉर लूप्स कैन बी यूज ओनली ऑन द इटरेबल, करेक्ट? एंड हाउ इट वर्क्स, keyword for, then your temporary variable, जो भी आपका temporary variable है, okay, in, right, and then that iterable, whatever iterable object, colon, and then the statements. It can be one statement or more than one, एक या एक से ज्यादा. If it is more than one, you have to put it in a same indentation. Now I hope till now you have got used to.
That in Python, if you want to make a block, you have to type in the same column. So you don't decide your column. Best is the moment you press enter, automatic it will come ahead. From there only you continue typing. Your editors are only smart enough. Getting? Now how it will work? From that iterable, one by one value, it will copy in that temporary variable. Like in this iterable, there are 5 values. Copy, it is not going to remove it from here. It will remain there in the iterable. It will just copy one by one value. So first value copied in temporary. First value is copied from the iterable in temporary. Statement performed. Again, next time, next value copied in temporary. Statement performed. Now, if there are no more values to visit, इसमें visit करने के लिए अभी कोई values ही नहीं है, ठीक है? If there are some 4 values. So first value copied in temporary, statement performed. Next time, second value copied in temporary, again statement performed. This way, if all the values are visited, for loop will stop. Getting? And here also to for loop, you can attach else block. And again, please remember when your for loop completes naturally. Now for loop will complete naturally when it visits each and every value in the iterable. इटरेबल के अंदर के एक एक वैल्यू अगर विजिट कर लिए हैं, इटरेबल के अंदर के ईच एंड एवरी वैल्यू विजिट हुए हैं, ओके, देन it will come to else, run the else block. But you have not completed visiting and in between only you're forcibly coming out, it will not run else block. Okay, so I hope it is clear. Yes. Syntax clear? So one by one, every time one value from the iterable copied in the temporary, statement perform. Second value, temporary, statement perform. This way, if you visit each and every value in the iterable, for loop over, it will run else block once. Okay, but Python for loop is only for iterable. That is the rule. Okay, see for X in sequence below, iterable below, collection below. But normally sequence or iterable is a common word in Python. And here also you have a else block. Okay, if we check for loop, sorry, if you check the what we can say flowchart of this for loop, it will initialize an indicator to the first element in the iterable. That indicators are called as iterator. It's like a pointer. Iterator is a pointer which is pointing to the current element. So first time it is pointing to first element. But once you fetch with one value, next time it will be pointing to second element, third element. How we will come to know how many elements are visited till now? अब तक कितने एलिमेंट्स विजिट हुए हैं? तो हर इटरेबल का अंदर एक इटरेटर भी होता है. Every iterable will have a iterator. Iterator is like a pointer which is pointing to the current element. So one element fetched, copied in X, code perform, again come to the next. तो next के लिए तब तक वो iterator आगे element को point करता रहेगा. It will be pointing to the next. एक element fetch किया, वो iterator third को point करेगा. This way it will go on. ठीक है? तो it is just checking every time. Are there more elements to visit? Sequence में और elements visit करना है क्या? Yes. So get that next element, do the body. Is there more element to visit? Yes. Get that next element, perform the body. And if there are no more elements to visit, it will stop and continue with the remaining code. ठीक है? Okay. We will see one demonstration. It will be more clear to you. While name for demo I'll give. ठीक है? Suppose for string I am traversing s equal to hello world.
And one by one characters I want to traverse. For X and S. For string, it is okay. Why? Because string is a sequence. It is a sequence of characters. But you cannot traverse it for an integer, ऐसे लिखा है, 1, 2, 3. It will give an error. Integer object is not iterable. 1, 2, 3 एक स्केलर वैल्यू है, एक ही स्केलर वैल्यू है, तो इसको हम 1, 2, 3 ऐसे ट्रैवर्स नहीं कर सकेंगे. It is just a single scalar value. It will give an error that int object is not iterable. You can check it. Now, can you tell me what will happen? What it will keep giving to x every time? One by one letter. First time Yes. H, then E, then L, then L, then O, then space, then W. एक एक character आते जाएगा. When all the characters are visited, it will stop. Suppose I'm printing that x. That's all. इसके बाद मैं just लिख रहा हूँ all done. Okay. Is it printing HELLO space WORLD exclamation and last line all done. Here also I'll put one else block. ठीक है? I'm putting all is well. क्योंकि all is well तभी तो else को आएगा ना. Naturally खत्म हुआ है तो सब कुछ अच्छा है ना. Naturally terminate. Getting? And premature terminate हुआ तो all is well नहीं है, वो सिर्फ all done को आएगा. Getting? See. HELLO sub, then all is well, all done. Has it executed else block? Has it executed else block once only at the end? Yes. Getting? And suppose in this, I'm putting one condition like this. If X is W, okay, I'm putting break. See, you can write that break on the next line. See, जैसे ही मैं next line वो indented ही आ गया. Because this break is in this if. This else is of the for loop. Okay. Now, every time it will retrieve one character from S. S से एक कैरेक्टर आते रहेगा. पहली बार H, फिर E, फिर L, फिर L, फिर O. And every character we are printing and checking whether it is W. Check कर रहा है कि वो W है कि नहीं. If it is W, break. ठीक है? तो till W वो print करे, W भी print करेगा. And when it is W, it is breaking directly and all done. That time all is well won't come. See, hello W. And the moment W, does it terminate the loop? And loop terminate Yes. होकर जब बाहर आया, तो all is well नहीं आता. Now you may say like for loop is only for strings. No guys, it is for any iterable. तो देखो अगर मैं create कर रहा हूँ list, list is also iterable. Okay, L equal to, I'm putting some values in it. Ram, Sita, 45, 5.6, true, कोई boolean value डाल दिया. ठीक है? कुछ और values डाल दिए. फिर कुछ complex numbers डाल दिए. Right? So many strings I'm putting. So strings, numbers, float, boolean, complex number. And for this also you can apply for loop. For x in L. For x in L. तो L में वो string राम है. पहली बार X में राम आएगा. Next time सीता आएगा. Next time 45. Next time 5.6. Next time true. Next time Alia. Next time 78. Next time 4.5J. 4 plus 5J. And we are printing it. अब कुछ लोग बोलोगे हर बार for loop में printing ही करना होता है क्या? Can we do anything else? Yes, guys. Problem to problem vary हो सकता है. ठीक है? देखो. Is it printing each and every value Ram, Sita, 45, 5.6? हर एक वैल्यू. तो ऐसे लिस्ट पे भी चल जाएगा, टपल पे चलता है, सेट पे चलेगा, डिक्शनरी पे चलेगा, जो भी इटरेबल है उस पे चलता है. एनी इटरेबल इट विल वर्क. ठीक है? इज इट क्लियर? Yes.
Okay, we are going to learn, we are going to solve some programs, लूप्स के ऊपर के प्रोग्राम सॉल्व करने. मैं जस्ट ये सिंटैक्टिक चीजें पहले कवर कर ले रहा हूँ. एक बार सिंटैक्स क्लियर है, देन वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइजेस. ओके, क्विक कंफर्मेशन देंगे बाकी लोग भी, so Yes. that we can discuss about the remaining, the third category, that is transfer instruction. Now, transfer instruction. In that first comes break. Transfer instruction means it will transfer the flow of execution from some point of code to some another point. Getting? So in which break we have already discussed. Means indirectly example में आ चुका है. Please remember, break in Python can be used only within loop body. ठीक है, सिर्फ किसके अंदर यूज किया जा सकता है? लूप बॉडी. आपको कैसे, अभी तो आपने इफ में यूज किया है, बट प्लीज सी टू इट. इफ इज अ पार्ट ऑफ लूप. अलोन इफ में नहीं लिख सकते हो. इधर आके दिखाता हूं, देखो. इफ मैं लिख रहा हूं 10 ग्रेटर देन 5 ब्रेक, ऐसा अगर लिखा मैंने, इट विल गिव एरर. Getting? Is it giving syntax error? Yes. But Yes. if I write it within some loop body के अंदर लिखा है, ठीक है, कंडीशन ऐसे दे रहा हूं, I equal to 1, then I'm writing while I less than equal to 10, and फिर इसके अंदर मैं कोई if लिखता हूं, if 10 greater than 5 break, no, तो print I and I equal to I plus 1. इस केस में वो सिंटैक्स एरर नहीं देगा. Why? Because break is okay inside if, but if is a part of loop. Is it in a alone if? देखो अभी भी मैंने break if में लिखा है, but वो if alone है. बट अभी break जो if में लिखा है वो if loop का पार्ट है, इसलिए allowed है. अंडरस्टैंडिंग? Yes. अभी कहोगे ये कोड में कुछ आउटपुट क्यों नहीं आया? क्योंकि पहली बार ही कंडीशन ट्रू आया, ब्रेक. I how much? 1. Is 1 less than equal to 10? Yes. Is 10 greater than 5? Yes. Break, डायरेक्ट बार. तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, कुछ इंक्रीमेंट भी नहीं हुआ. एनीवे, बट देखो वही इफ जब किसके अंदर आ गया, while के, तब चला. यही बताना है कि ब्रेक कैन बी यूज ओनली विद इन, ब्रेक किस में यूज हो सकता है? ओनली विद इन लूप बॉडी. ओके, एंड वेन एवर इन अ लूप बॉडी, within the loop body, Python interpreter encounters break. Means your Python interpreter is statement by statement running the loop body. And while running the loop body, it encounters break. It will simply terminate the loop. Loop को वहीं terminate कर देगा. And it will continue with the code which is outside the loop body. लूप बॉडी के बाहर जो भी कोड है, it will continue running from there. Understanding? Clear? Terminate. Understanding? So every day you are attending the session. So today you have attended, tomorrow, and after 3-4 days you realize Python is not my niche. ये मेरा niche नहीं, means मेरा ट्रैक नहीं है, ये मुझे कुछ समझने वाला नहीं है. तो ब्रेक मीन्स उसके बाद के कोई लेक्चर को आप आते ही नहीं हो, क्योंकि छोड़ दिया आपने, वो फील्ड ही छोड़ दिया. गेटिंग? तो दैट इज ब्रेक. आई होप यू गॉट इट. कुछ लोग बोलेंगे पूरा टॉन्ट मारने का एक भी चांस छोड़ते नहीं है सर. सो व्हाट आई वांट टू से इज, दिस इज द लूप. Within the loop body there is break. Your Python interpreter is running the loop body statement by statement, and it has encountered break. It will stop that loop and directly come out of the loop body and continue with the first statement which is outside the loop body. Getting, guys? Clear? So I hope you got it. Generally ये कब useful होता है? Like infinite loops होता है. आपने loop ऐसे लिखा है, while true. So this is an infinite loop. While true हमेशा true ही है. Getting or no? So now when you have written while true, the loop will go on.
So by some means you will put a condition and try to come out of it. Right? If you have read Bhagavad Gita, तो अभिमन्यु महाभारत भी देखा रहेगा, पढ़ा नहीं है तो छोड़ दो, एटलीस्ट टीवी पे देखा रहेगा. तो हाउ अभिमन्यु गेट्स स्टक इनटू अ चक्रव्यूह. तो उसको उसके पास भी अगर ब्रेक इंस्ट्रक्शन होता तो ही वुड हैव कम आउट. डोंट यू थिंक? सो वो भी एक क्या था, इनफाइनाइट लूप ही था, बट विद इन दैट इनफाइनाइट लूप देयर वाज नो इफ एंड अ ब्रेक, and therefore he couldn't come out. सोचो अगर वो बाहर आ सकता था तो उसके आगे का if and else, इसलिए बोलते हैं ना if else तब से है, तो आगे का पूरा स्टोरी कंप्लीट अलग होता था, right? And the whole scenario would have been different because it is assumed he was more powerful than his father. Getting? Anyways, so I hope break if come in a while loop or in a for loop, simply the loop execution is stopped and the control come out of the loop body. Getting? Break statement is used in loops strictly for and while. Then I said while executing loop body, if your Python interpreter encounters break, it simply transfers this control outside of the loop body and terminate the loop. Transfer control to the statement immediately after loop body, leaving all the other statement after the break unexecuted. Getting? Example you can check. अब बताओ ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहां मैंने इनफाइनाइट लूप लिखा है, i equal to 1 while true. Every time I'm checking whether I is 5. Yes, break. No to print increment. So 1 is printed, 2. 2 is printed, 3. 3 is printed, 4. 4 is printed, 5. And when it comes here, is 5 equal to 5? Break. So is this loop going to print 1 to 4? Yes. 1, 2, 3, 4. तक प्रिंट करें. पहले 1 था. Is 1 equal to 5? No. तो print 1, make it 2. Is 2 equal to 5? No. तो print 2, make it 3. Is 3 equal to 5? No. तो print 3, make it 4. Is 4 equal to 5? और ये डायरेक्ट इधर आने वाला है क्योंकि ट्रू है ना, इनफाइनाइट लूप है. ट्रू इज ऑलवेज ट्रू. So 4 equal to 5? No. So print 4 and make it 5. And when it comes here, is 5 equal to 5? Yes, break. Directly bar. Continue with the statement which is outside the while body. Okay, so I hope it is clear. देखो, इसका flow chart समझ लो. At the entry, it is testing this condition. Entry condition. At the entry only, if the condition is false, directly it will continue with the remaining code. ना? अगर false है, entry पे ही condition false है, तो directly remaining code. But if at the entry condition is true, then it will come inside and check whether it is a if break statement. अंदर आने के बाद देखता है कि break है क्या. Yes, तो भी terminate. And break नहीं है तो फिर जो भी आपका बचा हुआ कोड है वो देखो, remaining loop body. Who is there? Print I plus 1. That is remaining loop body. Again come. Again check whether the condition is true. Yes, अंदर आ गए. अंदर आने के बाद देखना है कि whether it is break. Yes, terminate the loop. No, perform the remaining code. Going on. ठीक है? Is it clear? Break, you can use it in many statements. It's not like only within for or a while. Not only for, for and while में ही, but in many types of for loop. ऐसे बोलना था कि ये sequence वाला for loop है, list का for loop है. Later हम range generators का for loop use करेंगे. Correct? तो any variations of for loop, कोई भी टाइप का for loop variation है या while loop, you can use in any type of loops. ये बताना है. Correct? तो decreasing for loop नहीं बोलना है, decreasing while loop is decreasing, तो भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है?
तो ब्रेक का कॉन्सेप्ट क्लियर है. अभी ब्रेक ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स में यूज किया. देखो जैसे ये, in this case the moment w we have terminated, right? Previous while loop में भी किया था हम लोगों ने. In case of while loop also we did that. See, if I is 3, break. The moment I become 3, break. ठीक है? तो कंटिन्यू देखते हैं. Now what does continue do? Again same like break, continue also is to be used only within loops. That is for and while के अंदर ही इसको यूज किया जा सकता है. ठीक है? Where we can use this continue only within loops. Now what does continue do? It is opposite of break. Means within the loop body, when your Python interpreter encounters break, loop body चल रहा है and loop body में break encounter हुआ. So what is your Python interpreter doing? It is simply terminating the loop and coming out of the loop. Okay. Now instead of break, if continue come. Okay. So whenever your Python interpreter encounters continue within the loop body, it will skip the remaining statements of the current iteration. अभी का iteration के जो बचे हुए statement है, it will skip and it will bring the control back to the beginning of loop for the next iteration. Next iteration वापस शुरू करेगा, but ये iteration के जो बचे हुए statement है वो skip करेगा, bypass करेगा. It will simply bypass the remaining statements of the current iteration and come to the beginning of the loop for the next iteration. Understanding? एग्जाम्पल देता हूं कि यू आर एवरीडे अटेंडिंग द सेशन, रोज अटेंड करते हो, बट कोई तो दिन आपने एक हाफ लेक्चर अटेंड किया. You have attended, now suppose it is 1 hour session, so 30 minutes you attended, and then you realize that you have some other important work. आपका कोई other meeting scheduled है, if you are working and attending the session, or anything else. Getting? So you decided, I want to skip today's session. बट ऐसा नहीं कि आपने पाइथन का लेक्चर ही छोड़ दिया है. टुमारो यू आर गोइंग टू कम एंड अटेंड टुमारो सेशन फ्रॉम द बिगिनिंग. गेटिंग? अगेन कहेंगे हर जगह पे टॉन्ट मारते हैं, राइट? तो कहना क्या चाह रहा हूं, टुडेज सेशन जस्ट यू हैव स्किप्ड. आज के सेशन का जो 30 मिनट्स था वो स्किप किया, but tomorrow you are going to come back again from the beginning to attend tomorrow's session from the beginning. I hope you understood. And break means कल तो आने ही नहीं वाले, कल एंड उसके आगे के कोई भी लेक्चर नहीं, क्योंकि आपने ब्रेक करके डायरेक्ट बाहर ही आ गए. Continue means what? I hope you got it. So continue just skips the remaining steps of the current iteration. अभी के iteration के बचे हुए statement skip कर रहा है. And it will come back to the beginning for the next iteration to start again from the beginning. अगला iteration वापस पहले से शुरू होगा, but previous iteration के बचे हुए statements skip किए. Clear? Yes or no? The basic Yes. functionality is clear. So continue statement is also to be used in loops, for loop and while loop. Again, when your Python interpreter is running the loop body, and within the loop body it encounters continue. See, while executing loop body, if the interpreter encounters continue statement, it transfers control to the beginning. Loop body के बाहर नहीं. अगर break है तो वो loop body के बाहर लेके आता है. Here it will just bring the control to the beginning and skip the remaining statements of the current iteration. Getting? So control to the beginning of the loop and skips the rest of the statement in the current block. Okay? Is it clear? Yes. कोड देखेंगे. We'll see. जैसा एग्जाम्पल देखो, यहां मैंने लिखा है I equal to 0. Then I'm checking whether I is less than 10.
Yes, I'm incrementing I by 1 and checking whether it is 5. No, then I'm printing. After printing, again come and check. So when I is 5, that time the printing work is skipped. It will just skip the printing work. Understanding? Only for which value printing work is skipped when I is 5. So is this code going to print from 1 till 10 except 5? सिर्फ 5 नहीं आएगा, बाकी सब एक प्रिंट होगा. राइट और नो? देखो जब लास्ट में 9 होता है तभी भी देखो 9 लेस देन 10, यस, तो 10 बनाएगा. इज 10 इक्वल टू 5? नो. It will make it, it will print that 10. After printing 10, it will come here. Is 10 less than 10? No, false, stop. ठीक है? तो ये प्रिंटिंग का लॉजिक जो है वो सिर्फ एक ही समय स्किप होता है. कब? जब I इक्वल टू 5. ठीक है? टेल मी, I इक्वल टू 0. Is 0 less than 10? Yes. It will 2 make it 1. 0 less than 10? Yes. It will make it 1. Is 1 equal to 5? No. Print 1. 1 print हो गया, वापस ऊपर आया. Is 1 less than 10? Yes. Make it 2. Is 2 equal to 5? No. Print 2. Again ऊपर आया. 2 less than 10 है, इसलिए अंदर आया 3. 3 equal to 5? No. Print 3. Come back. Is 3 less than 10? Yes. Make it 4. But is 4 equal to 5? No. So print 4. ऊपर आ गया. 4 less than 10? Yes. Make it 5. Is 5 equal to 5? Yes. कंटिन्यू तो continue. Continue means direct condition checking. Skip करेगा printing. Printing skip. Directly beginning. ठीक है? Is 5 less than 10? Yes. Make it 6. ठीक है? Is 6 equal to 5? No. Print 6. अभी इसके बाद का सब प्रिंट होगा. 6, 7, 8, 9 and 10. ओनली कौन से केस में प्रिंटिंग स्किप हो गया? I equal to 5. I equal to 5, continue. Directly come back to the condition. बचा हुआ कोड skip. That's what I said. Na? When continue is encountered, it skips the remaining statement and come to the beginning of loop. ठीक है? देखो फ्लो चार्ट. एंट्री की कंडीशन चेक कर रहा है. एंट्री की कंडीशन. अगर एंट्री की कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली लूप स्टॉप, कंटिन्यू विद द रिमेनिंग. But if the entry condition is true, come inside and check whether it is continue. अगर continue है तो come to the beginning, and continue नहीं है तो run the remaining code. If it is not continue, run the remaining code. Getting? And after running the remaining code, again come back to test the condition. Agreed, guys? यस Okay? Then एक कंटिन्यू का एक एग्जांपल लेते हैं एंड फिर नेक्स्ट टाइम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वी विल सॉल्व इट इन VS कोड. अगर VS कोड इंस्टॉल कर लेते हो, नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड, कुछ नहीं है. गूगल में जाके सर्च करना है, डाउनलोड VS कोड, you'll get the software install. एकदम सिंपल एडिटर है वो. It is an very nice IDE for different languages, अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए. एंड नहीं कर पाए तो आई शो यू, डोंट वरी. ठीक है? कंटिन्यू का एग्जांपल देता हूं. कंटिन्यू डेमो. ओके. सपोज स्ट्रिंग में करना है तो स्ट्रिंग. अभी जैसे ये वाला एग्जांपल है वो तो देख लेते हैं पहले. while I less than 10, I plus equal to 1. ठीक है? I'm checking if I double equal to 5, continue, else print that. That's all. See, is it printing from 1 till 10 except 5? यस 5 के केस में नहीं प्रिंट किया. ठीक है? ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स है. लाइक एक स्ट्रिंग है
एंड स्ट्रिंग के अंदर सब कुछ अभी फिलहाल लोअर केस में लिखता हूं, हेलो वर्ल्ड। ओके, तो आई वांट टू प्रिंट वॉवल्स, आई वांट टू प्रिंट ओनली वॉवल्स, बाकी के समय स्किप होना चाहिए, या वॉवल स्किप करके बाकी प्रिंट करना, एक्सेप्ट वॉवल एवरीथिंग आई वांट टू प्रिंट। गेटिंग? तो कैन वी राइट फॉर लूप मीन्स कंटिन्यू फॉर लूप में भी चलेगा। सो देखो, फॉर एक्स इन एस, अभी हम चेक करेंगे कि वो वॉवल है क्या। अगर वॉवल है तो कंटिन्यू करो। हाउ यू विल चेक वेदर एक्स इज वॉवल? एक्स इन एंड एक स्ट्रिंग बनाओ वॉवल की, ए ई आई ओ यू। आई होप ए ई आई ओ यू आर वॉवल्स। यस, देन कंटिन्यू। कैन वी यूज इन ऑपरेटर फॉर मेंबरशिप चेक? तो ए ई Yes. आई ओ की एक स्ट्रिंग बनाई है, ये एस में से एक एक कैरेक्टर एक्स में आते रहेगा, एस में से एक एक। फिर आप चेक कर रहे हैं कि वो एक्स ए आई ओ में है क्या, है तो कंटिन्यू डायरेक्टली, गो टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, नो देन प्रिंट। सो व्हेन द प्रिंटिंग इज kept when it is vowel, एंड वो वोवल नहीं है तो प्रिंटिंग को आएगा। ठीक है, तो देखो, इज इट प्रिंटिंग एवरीथिंग अदर देन वोवल? एच एल एल Yes. स्पेस, अभी वोवल्स कौन थे? ए ई आई ओ यू। ठीक है गाइस, ओके, तो ये कंटिन्यू भी क्लियर है। नेक्स्ट टाइम थोड़े ट्रेस आउटपुट क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन लूप्स, लूप के कुछ ट्रेस आउटपुट क्वेश्चंस, एंड फिर कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।